Namaskar and welcome to another live. Now again, like I told you in the morning, this live too is Hindi and English. So this time I'm sure I have Sonu with me. Sonu, are you there? Please come in. So unlike last time, this time, yeah, here you are. Sonu is there Yes, with sir. me, and our colleague Shashank is there on the field. He was covering the press conference of Mr. Sharad Pawar. So he's also there on the field. So Sonu. Let me like we decided in the morning but we failed, so let's start this once again. Let's talk about first let's talk about Ajit Pawar's press conference. Now what really happened in Ajit Pawar's press conference is very I thought it was kind of loose or kind of weird, because I'll tell you what Ajit Pawar said. Ajit Pawar said that, listen, you know what, your politics should be when you are between 25 to 75. You can't play politics at 83. You should now 82, 83, whatever. You should now, bless us and let us do the work, and you should retire. This is what he told his uncle, Mr. Sharad Pawar. Now that actually is a very loose statement. I'll tell you why it's a loose statement. It is a loose statement is because this was the same Ajit Pawar, and he was the same Sharad Pawar who stood in the rains 2 years back, 3 years back. Okay, when he was 70, so 80 or whatever, 79, 79, 83, ठीक है ना, it was not much of a difference. He stood in that rain, and and that speech possibly won the kind of number of seats that NCP got. So that was kind of weird. And secondly, I don't think that Ajit Pawar is even as popular as Sharad Pawar, and I'm sure Ajit Pawar will also agree to me that he is not as popular as Sharad Pawar. So if Sharad Pawar actually retires and sits in the corridors, or he retires, I think he will have a lot of he will have a lot of work to do, because I don't think NCP is going to earn that kind of seats that NCP normally does without Sharad Pawar. That's number one. Now number two is let me do my regular rider. Let me talk about my regular rider. I say this once, I say this always. I am not sure whether this is Pawar versus Pawar or it is Pawar with Pawar. I am not sure of that. Okay, it could be Pawar with Pawar, and all these speeches, we have seen it in 2019. We have seen the narrative being built in 2019. We have seen the optics being created in 2019. And then Mr. Pawar saying, I bowled a googly. You never know, this time he may be bowling a Chinaman. So you never know. It could be googly, in swinger, whatever. So one doesn't know. So let that rider be very clear. Now, like I told you in the morning, I repeat myself, for the purpose of this reporting, I would assume that there is a split between the uncle and the nephew. I will assume that, and I will speak to you. But hearts of hearts, I think that is not possible, and it is something that it is a planned maneuvering. It's a planned split. Okay. Now, a couple of things which which Ajit Pawar said, nothing very significant, to be very honest with you, nothing very significant. What he said is, he said, listen, you know what, to help the people who voted for us, we have to be in the government, because then we will get funds, because we can be part of the Modi ji's government, and we will ensure that we can get enough funds for the MLAs and for the constituency. So that is why we always wanted to be we wanted to come into the government. Very strange, very strange. You see, in democracy there is something called as opposition parties. Democracy is not just about the governing party. Democracy is also about the opposition party. When a person votes for a particular candidate, the person is very clear that that person who is voting for could either be in the government or in the opposition. It is not that he is voting and he is saying, okay, this person will be in the government. ऐसा होता नहीं है. So the fact remains that this logic I didn't quite understand, but all the same, he said it, and I quote him. And he was kind of slightly scathing today against his uncle, and he said he should retire, and he should bless them, and he should understand what the people want, what their karyakartas want, what the people on ground want, and all of that. So that was what the broad speech was. I don't think there is nothing much that he has spoken. Now, ironically, I'll tell you 2-3 things that is important. First thing is, Sharad Pawar spoke, and the photograph in the screen behind, as in his backdrop, was of Sharad Pawar when Sharad Pawar spoke in YB Chavan Hall. When
Ajit Pawar spoke, photograph behind was Sharad Pawar. Was Sharad Pawar. It was his photograph behind. So the fact is, you see, all this, one doesn't understand. You are split, but you have Sharad Pawar's photograph. Sharad Pawar also has his own photograph. So one didn't understand that. Second thing is NCP, that is Ajit Pawar's NCP, has taken claim to the symbol and the name. He has written to the election commission, number one. Number two is he has also sacked Mr. Sharad Pawar. That was in the evening. He has sacked Mr. Sharad Pawar as president. Now, all this is natural because you have to sack Mr. Sharad Pawar. Otherwise, he cannot appoint himself. Otherwise, if he doesn't sack Mr. Sharad Pawar, or he doesn't take him out as national president, then Sharad Pawar with one letter can sack everybody because he is the president of the party. So all these are technical optics. Like I said, I still believe it's a lot more than eyes can see, and that is what it is. Nothing much. Sharad Pawar, in fact, spoke about his party. Sharad Pawar spoke that he will be the person who he will fight back. Ironically, I was very surprised with Supriya Sule's speech. When if somebody would have called my father, an 83-year-old man who cannot work and he has to retire and all that, I would have possibly reacted much more differently. I would have reacted very scathingly. Supriya Sule was I thought, very decent. He says, Ratan Tata, Amitabh Bachchan, Warren Buffett, Farooq Abdullah, all are now working. So why can't Sharad Pawar work? So I thought that was quite timid. Mr. Sharad Pawar says that today the entire country is watching us. The meeting is historic for NCP. We have to keep marching ahead despite the hurdles on our way, said Mr. Sharad Pawar. So basically, this is all what happened. And 18 MLAs were with Sharad Pawar. Sonu, just correct me if my figures are wrong. 18 MLAs were with Sharad Pawar and 32 MLAs were with Ajit Pawar. So Ajit Pawar, like I told you in the morning, needs 36 MLAs for him to circumvent the anti-defection law. He needs 36 MLAs, and it is like it's in a very precarious situation. For me, it looks as if the negotiation is still on. The negotiation is still on, and one MLA will go on the other side. Okay, so that's the way it looks as far as I am concerned. I may be biased, so take it with a pinch of salt, as I would say. But this is what I think is happening. I think the negotiation is very hard. Everybody is playing close to the chest, and especially when you are playing with Sharad Pawar, you need to understand that most of the things that he say may not necessarily be true. So I'm sure Bharatiya Janata Party is playing quite carefully, and so is Ajit Pawar. So this is what I believe. Sonu, to you, over to you. सबसे इंटरेस्टिंग चीज ना यहाँ पर आज पूरे अगर इसमें देखा जाए तो एक चीज लग रही है कि जो अजित पवार के साथ बैठे हुए जो भी विधायक थे वो सभी सीनियर लीडर्स थे, और ये सभी सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जिनको शरद पवार ने ही बड़ा किया है। तो जिस तरह से ये पूरा का पूरा हमें ये पूरा एपिसोड देखने मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं तो लिखी गई है, और इस स्क्रिप्ट को लिखने वाला हो सकता है कि शरद पवार हो, क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जब कोई सीनियर लीडर ने पार्टी तोड़ी है और वो दूसरी पार्टी बना रहा है और वो अपने पार्टी के आला कमान के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। राज ठाकरे ने भी जब शिवसेना छोड़ी थी और एमएनएस बनाई थी तो उस वक्त भी उन्होंने बाला साहब ठाकरे के बारे में कुछ नहीं कहा था। फिर नारायण राणे ने भी जब पार्टी छोड़ी उस वक्त उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब शरद पवार जैसा एक बड़ा नेता जो है उसके सामने ही अजित पवार जो है उनके बारे में खरी खोटी बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि अजित मैं एक बात बोलूं इसके लिए। सी देखिए सुनो, बात ऐसा है कि जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर उनके खुद के एमएनएस चालू किया था तो लोगों को विश्वास था कि एमएनएस चालू हो रहा है, शिवसेना स्प्लिट हो गई और वो एटलीस्ट वो तो स्प्लिट हो गए शिवसेना से, लोगों को विश्वास था। जब
नारायण राणे छोड़ दिया तो लोगों को विश्वास था कि नारायण राणे ने शिवसेना छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, ये लोगों को विश्वास था। लेकिन इधर लोगों को विश्वास नहीं है कि अजित पवार ने शरद पवार का मतलब एनसीपी को एक्चुअली छोड़ा है, या शरद पवार को उन्होंने ये किया है और वो अलग पार्टी, उन्होंने पार्टी स्प्लिट किया है, ये लोगों को विश्वास नहीं है। तो शायद ये जो आप देख रहे थे, ये जो ऑनस्लॉट आप देख रहे थे अजित पवार की तरफ से, ये शायद लोगों को विश्वास दिलाने के लिए होगा कि देखे मैं एक्चुअली जेन्युइनली वो 2019 जैसा नहीं, इस बार मैं जेन्युइनली पार्टी छोड़ा हूं। सो ये भी एक इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं सोनू, इसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से हम अगर ट्रैक देखें कि अजीत पवार जो है वो शरद पवार के आगे नहीं जाएंगे, अब तक का ऐसा ट्रैक रहा है। अजीत पवार ने आज जिस तरह से स्पीच दी उसमें उन्होंने 2004 से जो बातें शुरू हुई थी उन सब चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने उस वक्त से जो उन्हें कहा है वो करते आए हुए, शरद पवार जो कह रहे थे वो किया जा रहा था। तो अगर देख लिया जाए पिछले 20 साल का भी एक रिकॉर्ड निकाल लें, जब से महाराष्ट्र में जो कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता रही है, तो उसमें भी शरद पवार जो बोलते थे वो किया जाता था अजित पवार की तरफ से और दूसरे नेताओं की तरफ से। तो जिस तरह से ये नया एपिसोड हमें देखने मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि शरद पवार के इशारे पर भी हो, क्योंकि जिस तरह से आज शरद पवार का बॉडी लैंग्वेज लग रहा था, उससे शरद पवार जो है वो ये कह रहे थे कि देखिए पार्टी को नेशनल कवरेज मिल रहा है, पार्टी की हर जगह चर्चा हो रही है, पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर देख लिया जाए तो करप्शन वाला जो मुद्दा था, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम आज यहां पर किया गया है। कुछ दिनों पहले पीएम ने कहा कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए का करप्शन का आरोप है। आज एनसीपी के ही विधायक बीजेपी के साथ चले गए हैं, और आज जब ये सारी जब सुप्रिया सुले बात कर रही थी तो उन्होंने सीधे सीधे जो है बीजेपी का जो करप्शन का मुद्दा है उसे घेरना शुरू किया। तो जो करप्शन की एक इमेज बनी थी, मुझे लगता है कि आज उस इमेज को भी धोने का काम कर दिया गया है। जिस तरह से बीजेपी ने एनसीपी के नेताओं को अपने साथ ले लिया है, तो ये अपने आप में ही मुझे लगता है कि ये सिर्फ अजीत पवार के पार्टी से बगावत करने तक सीमित नहीं है। ये मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये किसी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रणनीति का हिस्सा है, लेकिन जो कुछ आज हुआ है, जिस तेज तर्रार तरीके से अजित पवार ने बातें कही हैं और जिस तरह से सुप्रिया सुले ने करप्शन वाले मुद्दे को घुमाया है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है इशारा कर रहे हैं। शरद पवार जितनी अगर देख लिया जाए तो जितने एकदम काम तरीके से आज उन्होंने अपनी बात रखी, तो उससे भी पता चलता है कि कुछ तो अलग चीजें आज यहाँ पर हुई है। शशांक हमारे सहयोगी इस वक्त फील्ड पे थे, उन्होंने पूरा कवर किया। शशांक के पास भी चले जाते हैं और पता करते हैं, बात करते हैं कि शशांक को क्या लगता है कि वहां पर किस तरह का माहौल था। शशांक, आप वाईबी सेंटर में थे, वाईबी सेंटर में किस तरह की सिचुएशन थी, क्या लग रहा था? आपने शरद पवार को वहां पर देखा, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, और जो पार्टी के जो बड़े नेता थे उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? क्या सच में वो इस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनके चेहरे पर उस तरह की जो है नाराजगी या फिर उस तरह की परेशानी नहीं है? तो सर देखिए, जो मेजर चीजें हैं वो शिवसेना के टाइम पे हमने जब कवर किया था तो जो चीजें देखने को मिल रही थी उसी तरीके की चीजें हो रही है। अगर डिफरेंस एक देखे तो उस समय भी बाला साहेब का फोटो लगा था और अभी भी दोनों जगह पर शरद पवार का फोटो लगा है, लेकिन यहाँ पे खंडन करने के लिए शरद पवार जिंदा है। वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी को रीडेवलप करूंगा और जो लोग हैं, जिन लोगों ने गलत किया है उनको उनकी जगह दिखाई जाएगी। अगर आप लोगों की बात करें, अगर आप कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं ने एफिडेविट जो है वो भरा है, और वो एफिडेविट भरने का जो कार्यक्रम होगा वो कल तक चलेगा कि हम जो है वो पार्टी के साथ है पूरी तरीके से। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कार्यकर्ता भी प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, इन लोगों को जो है वो ज्यादा मतलब जो भी चीजें कह रहे हैं कि इन्होंने धोखा किया है, बीजेपी के साथ गए हैं, इन लोगों को कह रहे हैं, ना कि अजित पवार को। तो अजित पवार पर
डायरेक्ट हमला अभी तक ना नेताओं की तरफ से हमने ज्यादा देखा है, जो कुछ शरद पवार ने कहा उतना ही, उसके अलावा नेताओं की तरफ से भी नहीं देखा है, और ना कि कार्यकर्ताओं के तरफ से हमने देखा है। That is a very जी। interesting point. That is a very interesting point, Shashank. Shashank, the point is nobody is directly, except for, of course, Sharad Pawar, nobody Can't is hear you, directly sir. blaming. Nobody is directly blaming. Can you hear me now? Okay, I have lost him. So I guess the point that I was trying to make is nobody is directly blaming Ajit Pawar. Except for Sharad Pawar, who blamed him. Nobody is directly blaming Ajit Pawar. They are all beating around the bush. They are blaming everybody, including Praful Patel to Sunil Tatkare to everybody but Ajit Pawar. So this is where the situation is currently. Sonu, I think he cannot hear me. Can you? Sir, could you Bring up repeat the question, sir? I can hear you. you can hear me now? Yeah, sir. Okay, excellent. Acha, I want to ask you, how is the mood of the people? So, as I said, the people are always what happened in Shiv Sena case. They are sloganing against Praful Patel. They are sloganing against Chhagan Bhujbal, but they are not attacking directly Ajit Pawar. They are saying that we are with Sharad Pawar. We are giving our utmost support to Sharad Okay, great, Pawar. great. But That's nobody is criticizing Ajit Pawar. So that is something which is uncanny, because when the Shinde rebellion happened, they were the Karyakartas were openly criticizing. They were shouting slogans against everybody who had switched sides. Other than that, I would say affidavits have been filed by Karyakartas claiming that they are with the party, and that program is going to take place till tomorrow. perfect. So the point is that this is the point I was trying to make. Never has anything been told against Ajit Pawar. It is always everything that is being spoken about is everybody else other than Ajit Pawar. So and the spat that happened is between Ajit Pawar and Sharad Pawar, I think, which also sounded quite scripted to my this thing. Now the point is, Sonu, are you there? Can you hear me? Okay, I think Sonu, can you hear me? Okay, I think I lost Sonu. Another point that I want to add is this entire thing about Ajit Pawar being used as Ajit Pawar being nominated as the next chief ministerial candidate. What Mr. Prithviraj Chavan yesterday told me and a lot of other news channels is that the chances are that Ajit Pawar will be nominated as the next chief minister. Eknath Shinde will be out. He will be disqualified. Ajit Pawar will be the chief minister, and that is the negotiation. Now, in a way, Ajit Pawar also, I think, made a statement, if I'm not mistaken, where he said that I want to be the chief minister. He said that statement today. Now, to my mind, I think Sonu, you're there, you're back. मैं एक बात पूछ रहा था. See, ये बात ऐसी चल रही थी कि Ajit Pawar will be the next chief minister. Do you think, or anyone, that Ajit Pawar can be made a chief minister, especially in 2024? Is that possible? 2024 is the election, and wouldn't they rather have Devendra Fadnavis as chief minister of Maharashtra after doing all of this? You know, after Eknath Shinde episode, now after NCP episode, after doing so much negotiation, you think 2024 के पहले they are going to have Ajit Pawar as the chief minister? Is that possible? सुजीत, यहाँ पर काफी कुछ हमें देखना होगा, सोचना होगा, क्योंकि आज महाराष्ट्र में जो सीएम है उनके पास भी 40 विधायक है, उनके पास भी बीजेपी से ज्यादा विधायक नहीं है. अगर बीजेपी को सरकार में रहना है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अजित पवार को भी ये मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 अगस्त तक का समय है जब स्पीकर है जो महाराष्ट्र के, वो एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं जिनके ऊपर निलंबित होने का जो तलवार जो है वो लटक रही है, उस पर फैसला लेने के लिए अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ये डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो फिर अजित पवार की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ सकती है. और अजित पवार की बार्गेनिंग पावर हम आज से ही देख रहे हैं.
आपको बता दें कि आज सुबह से ही ये खबरें आ रही थी कि अजित पवार जो है वो कई सारी मिनिस्ट्रीज को लेकर जो है वो अपनी दावेदारी महाराष्ट्र के जो कैबिनेट है उसमें ठोक रहे हैं। आज सुबह ये खबर आई कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको लेकर अजित पवार ये कह रहे हैं कि ये उनके पास चाहिए, जो कि एकनाथ शिंदे जो है वो कह रहे हैं कि ये जो मिनिस्ट्री है उनके पास रहनी चाहिए। और यही कारण है कि अजित पवार की वजह से एकनाथ शिंदे जो है वो काफी नाराज है। तो अजित पवार की जैसे ही सरकार में एंट्री हुई है उसके बाद अजित पवार जो है वो अपनी बार्गेनिंग पावर जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब अगर ऐसे हालातों में अगर हम देख लें और इनका आंकलन लगाया जाए कि 105 बीजेपी के विधायक हैं, 40 जो है वो एकनाथ शिंदे के हैं और 40 से हम पकड़ लेते हैं कि अजित पवार के हैं। इसमें से अगर एकनाथ शिंदे के विधायकों के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार जो है वो पड़ जाती है और ये हट जाते हैं, तो फिर बीजेपी को सत्ता में रहना है तो एकनाथ शिंदे अजित पवार की बात सुननी होगी। तो हालात जो है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे के विधायकों पर अगर तलवार लटकती है तो अजित पवार जो है वो कहीं ना कहीं ये डिमांड करेंगे कि वो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। और दूसरी ये बात भी हम देख सकते हैं कि आज जब उन्होंने जो स्पीच शुरू की तो उन्होंने एक बात कही कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पास काफी ज्यादा प्लान्स है, मैं उन चीजों को जो है वो उन सारी चीजों पर काम कर सकता हूं। तो ये इस और इशारा कर रहे हैं कि अजीत पवार ये काफी एम्बिशियस है और वो अपनी बार्गेनिंग पावर के जरिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी दे। और अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन जैसी चीज हो गई सुजीत, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास सत्ता में रहना है तो उन्हें जो है अजित पवार के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, अजित पवार के साथ उन्हें रहना होगा और जो अजित पवार वो कहेंगे वो करेंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी हो सकता है ये दे दे, क्योंकि अगर देख लिया जाए तो ये सभी एपिसोड के बाद महाराष्ट्र में कुछ 6 से 8 महीने का ही समय रह जाएगा और फिर नए इलेक्शन आएंगे। तो बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट मांग सकती है और बहुमत के बारे में सोच सकती है। See, I'll tell you what. There are two things that I think, Sonu, and first for my English viewers, let me translate what you just said. What Sonu says is, listen, Bharatiya Janata Party will have to kind of succumb to whatever Ajit Pawar says. That is assuming that the 16 MLAs of Eknath Shinde, including Eknath Shinde, is disqualified. So then they don't have a chance, which technically Sonu is not entirely correct, is because then the math in the assembly will change. The math in the assembly will change is because you'll have a lesser number of MLAs in the assembly because of the disqualification. That's number one. Number two is also what happens to NCP MLAs. That also needs to be considered. But okay, chalo, let's take that argument as a point that they would want NCP with them so that they can become formidable. They can become very formidable. See, to me, I think the clear indication, the clear reason why Bharatiya Janata Party was so desperate to get Ajit Pawar and company into their fold is because it was clear. It was clear with the CSDS survey and with a lot of other surveys. I'm sure there are more internal surveys that things are not going to be very easy for Bharatiya Janata Party in Maharashtra. Now, mind you, Bharatiya Janata Party last time got 41 plus 1, that is one of an independent, that is 42 seats out of the 48 seats in Maharashtra. Now, 41 seats out of 48 seats or 42 seats out of 48 seats, if they don't get this time, then that's going to have a large impact on their overall numbers. Mind you, Maharashtra is the second largest state in terms of number of Lok Sabha seats after Uttar Pradesh. So that's going to have an impact. Now, more than the assembly, more than working in the assembly, more than having majority in the assembly, chief minister, no chief minister and all that, they are more bothered about NCP not standing against them in the Lok Sabha election, but standing with them in the Lok Sabha election. That, I think, is the most critical matter in this entire story. And the entire deal is purely because of that. I don't think assembly is an issue at all. Now, I again say the reason I am saying that there could be a probability that they may want to have a Devendra Fadnavis as their chief minister is because, again, looking at Lok Sabha,
Lok Sabha election, if Devendra Fadnavis is the chief minister, then it will be advisable for BJP to have a BJP chief minister during the Lok Sabha election, especially the way BJP normally functions its elections. So it is always better to have their own chief minister sitting at the helm of the affair. Now with the Ajit Pawar is a person who is seen as known as headstrong person. He's a very headstrong gentleman. So being a headstrong person, would he be kind of, open to getting listening to everything that BJP says, listening to everything that BJP wants, is a question that one needs to understand. Now, one doesn't know whether he will listen. He may start listening also. I don't know. But as on now, he was, at least with Congress, he was very, very headstrong, and he got his way. So that's the point I was trying to make. So no, one more thing. The ministers, that is Eknath Shinde ministers, have demanded that plum ministries such as finance, PWD, irrigation, cooperative societies, cooperatives, not cooperative societies, my apologies, cooperatives, home affairs, housing, and revenue should not be given to NCP ministers. Which means what they are saying is most of the ministries which are important or which matter should not be given to the NCP ministers. This is not going to stand water. This is not going to happen. Definitely NCP will want a lot of these ministries, and they will get a lot of these ministries. So strike one. Mind you, this is going to be strike one, because this is where Eknath Shinde camp and BJP and NCP, there's going to be a problem. The first divide, the first crack is going to be this. This is a very, very important news. Again, I repeat, the ministers demanded, that is the Eknath Shinde camp ministers demanded, that plum ministries such as finance, PWD, irrigation, cooperatives, home, housing, revenue should not be given to NCP. So this is, like I told you, the major issue, major problem that we may see in the near future. Sonu, over to you. हेलो. हाँ सुजीत जी, ये जाहिर तौर पर अगर देख लिया जाए तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही, क्योंकि ये सारी मिनिस्ट्री जो आपने बताई है ये काफी एक तरह से अगर बोलते हैं बड़ी मिनिस्ट्री, और एक तरह से पॉलिटिकल भाषा में जो मलाईदार मिनिस्ट्री है। और अगर यही मिनिस्ट्रीज अगर एनसीपी को नहीं दी तो एनसीपी का सरकार में रह के क्या फायदा। तो करेक्ट, अजीत पवार को अगर फायदा नहीं होगा तो वो क्यों रहेंगे, और एकनाथ शिंदे ये नहीं चाहते कि अजीत पवार को किसी भी तरह से कोई बड़ा फायदा हो। तो ये काफी चीजें जिस तरह से आपने कही, ये आने वाले दिनों में जो है बीजेपी और एनसीपी से ज्यादा एनसीपी और एकनाथ शिंदे ग्रुप के बीच में इन सब चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स होने वाली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो बड़ी मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहेंगे, जो कि मेरे ख्याल से कई सारी मिनिस्ट्रीज उनके पास अभी है। और अजीत पवार डेप्यूटी सीएम है तो उनके पास भी कुछ बड़ी मिनिस्ट्री उनको चाहिए रहेगी, और अगर ये उन्हें नहीं मिला तो वो मुझे लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक तरह से चलने देंगे। जिस तरह से आपने कहा कि अजीत पवार जो है वो एकनाथ शिंदे जैसे नहीं है, अजीत पवार जो है वो किसी तीसरे की बात नहीं सुनते हैं, अजीत पवार वही करते हैं मिनिस्ट्री में रहते हुए जो उनके मन को ठीक लगता है। तो काफी मुफट और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरह के सवाल जवाब उनके हमेशा रहते हैं, और उनका तौर तरीका भी उसी तरह का है। तो वो सामने से मांगेंगे, अगर उन्हें नहीं मिला तो मुझे लगता है मूड चेंज कर दिया तो वो सरकार से दूर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर अजीत पवार सरकार से दूर गए तो मुझे लगता है कि बीजेपी को हो सकता है कि इसका नुकसान उठाना पड़े। नहीं, अगर अजीत पवार सरकार से दूर गए सोनू, तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्रॉब्लम अजीत पवार को भी हो सकता है, क्योंकि फिर उनके दरवाजे के बाहर ईडी और आईटी भी हो सकता है। तो ये भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए सोनू जी। सुजीत, एक और चीज मैं पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार को सरकार में लाने का फैसला जो है वो शपथ ग्रहण के 2 दिन पहले लिया गया, और इसके पहले एक बड़ा इंसिडेंस हुआ था जहां पर एकनाथ शिंदे ने एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी सपोर्टर्स की तरफ से एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश किया गया था, महाराष्ट्र के सभी न्यूज़पेपर में था, जो हम सबने देखा था, आपने उस पर सर शो भी किया था। तो ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है
वो देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता खुद को बता रहे थे, खुद की दावेदारी जो है वो अगले चुनाव में वो पेश करने जा रहे थे। और अ, We've lost इसका you. रिएक्शन Sorry. कहीं ना कहीं जो है वो जो है ये अजीत पवार को सरकार में लाकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने दिया। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पिछले महीने। See, 100% that was a political, absolute political suicide जिसको बोलते हैं ना. It was a political blunder. See, you are a chief minister and you are writing about your own deputy chief minister, saying that I am more popular than my deputy chief minister. It is, I thought it was very immature, very juvenile, and absolutely a political blunder. So उसमें कोई शक नहीं है. See, देखिए सोनू, you know what is interesting? What's interesting is one doesn't know what exactly is happening. See, mind you, Devendra Fadnavis also is not at the best of state at this point of time in Maharashtra. See, Devendra Fadnavis was a chief minister. He was relegated to, or he was reduced to, sorry, to deputy chief minister under Eknath Shinde. Okay, Devendra Fadnavis, if people say what people say is true, especially what a lot of senior Congress leaders say is true, and Ajit Pawar is going to be made the chief minister, then again Devendra Fadnavis's career is a big question mark. See, Sonu, going to center is not a promotion necessarily. Going to center is not a promotion necessarily. Danve also went to center after he was the state president and all. He was also put into center. What happened to him? So going to center is not necessarily a promotion, number one. Number two, it's very clearly, unlike Gadkari, Devendra Fadnavis was almost leading the state. He was trying to get a good grip on the state, and boom, you are sent in the center. What happens? You lose your grip on the state, if at all you are. That's the point number two. Point number three, I'm assuming the fact that Ajit Pawar will be made the chief minister based on whatever people say. If that happens, then what is the role of Devendra Fadnavis? See, as far as Eknath Shinde is concerned, Eknath Shinde was still tolerant. He was still, he could still, one could make out that Devendra Fadnavis is taking most of the calls. But with Ajit Pawar, that's impossible. Ajit Pawar won't let that happen. So there's going to be, Ajit Pawar will have a deputy chief minister and he will make him a deputy chief minister. He will not allow him to be a joint chief minister. That he will not allow. So this is, one has to also talk about what happens to Devendra Fadnavis. While, so answering your question, हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि जो वो एड जो निकाले थे वो गलत था, तो उसमें कोई शक नहीं, और मुझे लगता है वो इमेच्योर था. वो एड कोई निकालना नहीं चाहिए था. खुद के गवर्नमेंट में खुद चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पॉपुलर हूँ, गलत था, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट ये भी हमको समझना चाहिए कि हमको अभी तक ये नहीं मालूम कि एक्चुअली इनका रोल क्या है, देवेंद्र फडणवीस का रोल क्या है, और उनको कितना, मतलब इन लोग प्रमोट करेंगे, जो सेंटर लीडरशिप है बीजेपी का, उनको कितना प्रमोट कर रहे हैं. दैट्स समथिंग दैट इज येट टू बी सीन. I think Shashank is waiting for a question, Sonu. I can't speak to him, so I guess you'll have to talk to him. शशांक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सोनू. शशांक, यहाँ पर एक खबर आ रही है कि ये जो 40 एमएलएज है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, और लेटर लिखकर ये कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो रियल एनसीपी जो है वो उनको, उनका जो ग्रुप है, उनको रियल एनसीपी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए. तो इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं, हम हमारे इंग्लिश ऑडियंस के लिए जानना चाहेंगे. Whatever you have said, that news is correct, because this is the phase one of what happened in the Shiv Sena case. So now if they have to claim on the party and the symbol, so they have to approach the election commission. That is what they have done. They've written to the election commission also, what Sujit sir said, that he has sacked Mr. Ajit Pawar as party president, and now because if he would have not, then Mr. Sharad Pawar would have sacked the other MLAs who did anti-party activities. So this is part of the process. But what I believe right now is Mr. Sharad Pawar has announced
a yatra, or what you say, a Maharashtra yatra, what he's going to do, because after which I think things would be much more clearer, because what the leaders over here believe that a lot more people would come here and go there. There is still clarity, there is still time for clarity. This is not the final picture which has come out, so I think there's still time. सुजीत, एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरफ से शरद पवार का जो हमने ये देखा है कि बॉडी लैंग्वेज था, क्या शरद पवार ये चाहेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है वो अपने पार्टी के नाम और सिंबल के लिए क्या लड़ेंगे? क्या वो टाइम वेस्ट करना चाहेंगे जिस तरह से शिवसेना में उद्धव ठाकरे ग्रुप ने किया है? क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल लग गया ये फैसला आने के लिए कि शिवसेना किसकी है। तो 1 साल मतलब अगला चुनाव आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या शरद पवार क्या करेंगे? क्या शरद पवार जाना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन, या फिर वहां पर लड़ेंगे, या फिर जनता की अदालत में वो जाना चाहेंगे? सुनो, मैं एक बात बोलूं आपको। पहली बात तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द टाइम। मुझे नहीं लगता ये वक्त के कारण ये वो नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता है ये ऐसा कोई झगड़ा या लड़ाई होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ऐसा कुछ झगड़ा होगा। मुझे ये लगता है कि आस्ते, स्लोली बट स्टेडीली, एज अजित पवार बिकम्स द सीएम एंड दे स्टार्ट गेटिंग गुड पोर्टफोलियो, एक एक करके लोग यहां से वहां जाएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, ये शायद गलत हो, बट मेरा अनुमान है कि सुप्रिया सुले सेंटर में जाएगी एंड शी मे गेट अ गुड पोर्टफोलियो देयर विद द भारतीय जनता पार्टी। एंड फाइनली शरद पवार may decide to retire like what Ajit Pawar said. So अगर ये एग्रेशन होता, अगर दिस एग्रेसिव टेम्परामेंट होता, तो ये एग्रेसिव टेम्परामेंट आज दिखता सोनू। So that temperament would have been seen. See, please see one common thing between what happened in 2019 and 2023. What happened between 2019 and 2023 is one common thing, and I say this on record. One common thing is neither did Sharad Pawar or his family, that is Supriya Sule, say anything against Ajit Pawar in 2019. Nor is Sharad Pawar. Sharad Pawar must have said it now, but nor is Supriya Sule or the people saying anything against Ajit Pawar even 2023. They are blaming. Last time they were blaming Dhananjay Munde. This time they are blaming Praful Patel and others. So the point is, this is whether they will go for the symbol, they want the party symbol. All this, I think, first the question is not that, Sonu. The question is whether Sharad Pawar engineered the split, and I think Sharad Pawar did that. So the answer to your question is, it will all go. We will go according to the motion. It will go according to the motion. Things may change. Things may change, and this I am telling you again. Things may change, like what happened last time. Things may change if Sharad Pawar realizes that going with BJP was a huge mistake for NCP in terms of their voters' sentiments. वो अगर उनको दिखा, if he goes on ground and he finds that the voter sentiments are for Congress and for Shiva Sena, and he has lost the voter confidence, then things may change. Then the reverse, ghar wapsi could also start. So be ready for that also. So ghar wapasi will also start. See, finally this game is played. This game maybe BJP must have orchestrated this. BJP must have given the offer, but this game is being played by Sharad Chandra Pawar, and what he decides is finally going to happen. And if he thinks that BJP will win the state and the center, he may go with BJP. He may allow his people to go with BJP. He may not necessarily go with BJP or not go with BJP, but he will allow his people to go with BJP. And if he thinks otherwise, then he will pull back everything that went. So this is the status. This is what I think. सुजीत, एक चीज अगर देखा जाए तो ये जो अपोजिशन बन रहा है, अपोजिशन में शरद पवार का एक बड़ा रोल है। तो महाराष्ट्र में ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि शरद पवार लास्ट मोमेंट में डिसाइड कर सकते हैं कि उनको बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना है, अगर वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई संकेत जो है वो जो अपोजिशन, यूनाइटेड अपोजिशन जो बन रहा है, अगर उसको मिलता है,
तो क्या अपोजिशन जो है वो बन पाएगा? क्या शरद ये जो सब कुछ हो रहा है और जो शंकाएं पैदा हो रही है, जो कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है शरद I think we have lost Sonu again. तो हाँ, इससे आपको क्या लगता है कि क्या यूनाइटेड अपोजिशन में भी कहीं ना कहीं डेंट हो सकता है? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं शरद पवार यूनाइटेड अपोजिशन में। see, I'll tell you, Sharad Pawar would have been a very huge asset for united opposition, but Proviso Sharad Pawar stands with the united opposition. अब इशू ये है सोनू, और ये मैं कल, इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, आई स्पोक टू पृथ्वीराज चौहान yesterday and he too more or less I think agreed to me to the best of the way he could as to be politically correct. You see, you think that united opposition will now believe Sharad Pawar? You think united opposition will believe that Sharad Pawar has actually, he's been kicked out of his own party and he is now coming and he is now fighting back? Do you think united opposition will believe? You see, you can cry wolf once, but every day if you cry wolf, nobody is going to believe you. This happened in 2019. This is a repeat of 2019. So even if he is saying the truth, for instance, let's assume that for a minute, a lot of people will not believe him. So the fact remains that Sharad Pawar is important to united opposition if he is united with the opposition. But Sharad Pawar is keeping his foot in both the boats and trying to see which is more stable and then jump to that particular boat, then it's a different issue altogether. At the moment, it looks as if he's keeping his options open. He's keeping his option open. He could go with the opposition united. He could go with the Bharatiya Janata Party. And from where I see it today, I think he is more inclined to go with Bharatiya Janata Party for 2024. Whether he personally will go or not is a different issue. But he's more. It seems to me, he's more inclined to go with Bharatiya Janata Party for 2024. This is what I think. शशांक, आप वहां पे थे, तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरी महाराष्ट्र में जो सहयोगी पार्टी है महाविकास आघाड़ी की, शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आया है? क्या आज की जो मीटिंग थी शरद पवार की, क्या उसमें क्या कुछ शिवसेना और एमपी कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स आए थे या फिर उनके समर्थक वहां पर आए थे? क्या कुछ ऐसी जुगलबंदी दिखाई दे रही थी? Sonu, can I just intervene for a minute? Yes. I just want to answer Gracia Mahipat's answer, Gracia Mahipat Singh's answer. See, मैं Gracia आनंद वर्धन के चैनल में मैं 5-10 मिनट पहले था, मैं वो हिंदी डिबेट था, ये मैं हमारे दो चैनल्स हैं, हमारे एक इंग्लिश है और एक हिंदी है, तो हम दोनों ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी के बीच बोल रहा हूँ. सो इट इज नॉट बिकॉज मैं हिंदी नहीं बोल सकता, इट इज बिकॉज हमारे इंग्लिश ऑडियंस भी है, हमारे हिंदी ऑडियंस भी है, तो ये लाइव हम दोनों के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ. सो दैट्स द पॉइंट. तो जस्ट उनका एक डाउट क्लियर करना था. यस सोनू, सॉरी, कंटिन्यू. मैं शशांक से ये सवाल पूछ रहा था कि शशांक, शिवसेना और कांग्रेस का वहां पर अगर देख लिया जाए तो ऑन ग्राउंड किस तरह का रिएक्शन है एनसीपी के इस ये जो एनसीपी में जो बगावत हुई है उसको लेकर, और कितना विश्वास महाराष्ट्र में खासतौर पर जो आला कमान जो है वो उन लोगों का किस तरह से रिएक्शन देखने मिल रहा है शरद पवार को लेकर? हालांकि एक मीटिंग भी हुई थी जिसके अंदर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की है. शशांक को अनम्यूट करो. शशांक. Pawar, and they have said that they are with Sharad Pawar also. Last night when Sujit sir spoke to Mr. Prithviraj Chavan, former Chief Minister of Maharashtra, he had said that this split looks real, and also there were statements made that they stand in solidarity with NCP. So I think the Mahavikas Aghadi is very much there on ground. It's still there in the hearts of Karyakartas.
And what I feel, because that the attempt, this particular attempt to break the NCP, if it is real, then this was made because it was very difficult for the BJP to win Maharashtra, which was very clear on ground. So this particular attempt was made, and so MVA has still not broken. And I think even what Sharad Pawar said, that even if we lose the symbol, then if we go out with go out in people, and if we have the support of the people, I don't think anything else matters. So what experience Mr. Pawar has, so I don't think so age really is a matter. And if he goes out and seeks support at this age, and with his experience, I think things can still change. There are still people who could come back, and they are in talks also. Mr. Rohit Pawar also told that after Mr. Pawar goes for his yatra, a lot of leaders would come back, and we could also see elections later this year also, the which is scheduled for 2024 actually, but we could see a preponed election. And during elections we have always seen that a lot of people switch sides. So I do think that MVA is still intact. सी तो एमबीए सोनू, सॉरी यस सोनू, एक बात बोलूं आपको मैं, ये बहुत जी इंटरेस्टिंग है। ओके, सी बात ऐसा है कि सबसे इसमें फायदा किसको हुआ मालूम है आपको? कांग्रेस को हुआ। जी अगर आप एमबीए पार्टनरशिप को देखें तो सबसे कम 44 सीट्स कांग्रेस के पास थी। ओके, जी सबसे ज्यादा सीट्स 54 जो है वो 57, I think 57 was शिवसेना Shiv Sena, right? 57 राइट was Shiv Sena, 54 was NCP and एनसीपी 44 was Congress, ठीक है ना? राइट अब देखें शिवसेना के पास कुछ 12-13 बचे हैं, जी एनसीपी के पास 18 बचे हैं। अब नंबर 1 पार्टी हुआ है कांग्रेस। जी All of a sudden Congress has become the boss of MVA, correct? ये राइट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखें सुनो कितना इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है महाराष्ट्र। जी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जी है एनसीपी, ऑपोजिशन में भी एनसीपी, महाराष्ट्र में सरकार में शिवसेना, ऑपोजिशन में भी शिवसेना, तो सरकार में भी शिवसेना, ऑपोजिशन में भी शिवसेना, सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, सॉरी एनसीपी एनसीपी, ऑपोजिशन में भी एनसीपी। सो व्हाट अ प्रिकेरियस सिचुएशन। अच्छा, मैंने एक अच्छा सा जोक सुना था, आज सुबह मुझे कोई बोल रहा था कि भाई मैंने एक ही बार वोट दिया लेकिन मुझे 3-3 चीफ मिनिस्टर्स मिले, और वो भी 3 डिफरेंट पार्टीज के। तो एक हम मिला भारतीय जनता पार्टी का, वो 98 आवर्स का गवर्नमेंट जो फडणवीस ने ये किया था, दूसरा मिला शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे थे, और तीसरा वाज नाउ एक नाथ शिंदे। अब शायद चौथा मिले वापस एनसीपी का। तो हमने एक वोट देके हर एक पार्टी के साथ हमने चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। ये मतलब एक मैजिकल फिगर है। इट्स अ हिस्ट्री आई थिंक ऑफ सॉर्ट। Just imagine one vote and all the parties in that state made a chief minister. If this one, if except for Congress, if Ajit Pawar becomes the chief minister, isn't it very funny? ये काफी interesting है, isn't it? हाँ? Sorry. ये महाराष्ट्र के वोटर्स का मुझे लगता है कि एक तरह से मजाक बनाया गया है, और इसी तरह के ट्रेंड्स जो है इस वक्त पूरे देश में दिखाई दे रहा है। सुजीत जी, अगर हम देखें ये ट्रेंड, ये कितना खतरनाक है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंडेट जो है वो किसी और को मिलता है और सरकार किसी और की बन जाती है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए कितना घातक है। बिकॉज वोट की फिर कुछ अहमियत रह नहीं जाएगी। आप वोट अगर बीजेपी को देते हैं तो सरकार महाविकास अघाड़ी बना लेती है, आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो बीजेपी जो है वो सरकार बना लेती है। यानी कि चल क्या रहा है, ये वोट देने का सिस्टम क्या बंद होना चाहिए? अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, अगर ये सारी चीजें होगी, या फिर सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही वोट देना चाहिए? सोनू, भारत में तकरीबन 30% लोगों ने, 30% मतलब मैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर, गोवा से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, कर्नाटका से लेकर, 30% ऐसे 30% भारत का ऐसा एक सिचुएशन हुआ है जिधर लोगों ने वोट किसको दिया था और मिनिस्ट्री कोई और लेके गया या गवर्नमेंट किसी और की बनी। मतलब उसका मतलब यह है कि
हमारे 30% लोगों का वोट का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ये आज की बात है। अगर ये चलन चलता रहा आगे तो 30% 60% होगा और 60% 100% होगा। उसका मतलब ये है कि हमारे वोट को एक पैसे का वैल्यू नहीं होगा। द लॉजिक इज दैट, बिकॉज क्या होगा मालूम है सोनू, ये इट्स गोइंग टू बी लाइक द पर्सन हु जो ये जो सेंट्रल एजेंसीज और आपस में पार्टीज मिलके अपने अपने गवर्नमेंट बनाएगी। महाराष्ट्र तो एकदम सॉलिड उदाहरण है, जैसा मैंने बताया। ऑपोजिशन पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर बना, एक वोट में हर एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बना दिया, कांग्रेस को छोड़ करके। जी, मतलब मेरे वोट का वैल्यू क्या रहा? जो लोगों ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, टेक्निकली स्पीकिंग महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी प्रीपोल अलायंस थी, मैक्सिमम वोट उनको मिला था। अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होता तो शायद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट रहता, और वो भी एक स्टेबल गवर्नमेंट शायद होता। उसको छोड़ करके आज इतना चीफ मिनिस्टर बना है। सी, इसमें रिजॉइस करने का कुछ नहीं है। कोई अगर अपने पार्टीज, अगर बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो रिजॉइस कर रहे हैं, देखो कैसे धोबी प्रचार कर दिया है वगैरह वगैरह वगैरह, इफ दैट्स द राइट वर्ड, भारतीय जनता पार्टी ने। और कोई कोई ये भी इससे खुश हो रहे हैं कि ईडी आईटी को यूज करके देखे कैसे हुआ। ये किसी क्यों खुश हो रहे, किसके लिए खुश हो रहे? उनका पार्टी जीता है किसके लिए? कि वो खुद आ रहा है इसलिए, क्योंकि वोटर हार गया। आज महाराष्ट्र में वोटर हार गया। ये जो गूगली है और ये जो चाइना मैन है और ये सब ना ऑपोजिशन पार्टीज पे नहीं, एक वोटर पे खेला जा रहा है। जो गूगली शरद पवार ने फेंका था, जैसा वो खुद बोल रहे हैं, वो ऑपोजिशन पार्टी में नहीं, वो वोटर पे फेंका था, मुझ पे फेंका था वो। ठीक है, मेरे वोट को उन्होंने इतना ही डिस्क्रेडिटेड। तो ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए सोनू। इट्स अ फैक्ट, ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा फेवरेट पार्टी आ गया, लेकिन आप ये बात समझना, आपका फेवरेट पार्टी आ गया लेकिन आप हार गए, यू हैव लॉस्ट। सो दैट्स द पॉइंट। और दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स एनार्की, ये एक ऐसा वक्त आएगा कि एक ही पार्टी होगा और वो पार्टी पूरा डोमिनेट करेगी। सो वी विल बी अ वन पार्टी, जैसे कि चाइना है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, वी विल बी अ वन पार्टी गवर्नमेंट, वन पार्टी रूल, और वो पार्टी सर्वस्व रहेगा इंडिया का। एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन लाइक दिस इज वेरी सैड। मैं मतलब ये सब हम लोग मजाक में सब बोल रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है। इट्स एब्सोल्युटली बैड फॉर डेमोक्रेसी। एंड व्हाट आई हैव जस्ट सेड, जस्ट फॉर माय इंग्लिश व्यूअर्स, व्हाट आई हैव जस्ट सेड इज something that I've said yesterday in my editorial. I've given you figures, I've given you facts, I've given you every vote that went, because of whatever central agencies, that agencies, horse trading positions. I've spoken about that. Please watch it. You will know what I'm talking about. Yes, sir. तो जाहिर सी बात है ये काफी घातक है हमारे लोकतंत्र के लिए, और जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो सही भी नहीं हो रही है। लगभग 1 घंटे का ये एपिसोड हो गया है, तो मैं सुजीत जी से और शशांक दोनों से इस वक्त हम चाहते हैं कि ये शो हम फिलहाल खत्म करते हैं। आप दोनों का इस शो के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जाते जाते आपको एक अपडेट दे दें कि कल शरद पवार दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ पर वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने जा रहे हैं, और हो सकता है कि कल दिल्ली में शरद पवार कोई बड़े फैसले ले। तो ये जो मामला है ये आने वाले दिनों तक और चलता रहेगा, और देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है। सुजीत जी, आप अगर क्लोजिंग रिमार्क्स आपके हमारे इंग्लिश ऑडियंस के लिए दे दे तो। So yes, Sonu, what I intend to say is, as things stands, there are blame games started, but nobody is blaming directly. It's all done very sweet, in a very sweet way. Everything is done very fine. Ajit Pawar blamed Sharad Pawar a little. Sharad Pawar blamed Ajit Pawar a little. But both the workers, both Ajit Pawar camp and Sharad Pawar camp, are not blaming each other. They are all blaming everybody else but each other. So all of this to me looks scripted. The point is, Ajit Pawar is aiming to be the chief minister. Possibly, chances are that by the looks of it, Ajit Pawar may be the chief minister. I wonder how BJP will do that, but all the same, that's what it looks like. Now, Eknath Shinde camp is very upset. Eknath Shinde camp says if you give plum postings to
Ajit Pawar and NCP, it is not acceptable by us. That's where Eknath Shinde stands. Now one has to see how long will Eknath Shinde be in the cabinet, because by the looks of it, if he's disqualified, that's end of story for Eknath Shinde. He has to go out of the cabinet. This is the status at the moment, and long and short, very ironical situation in Maharashtra. Every party became a chief minister. Every party person became a chief minister except for Congress. We all voted for one party, but then every party became the chief minister. And the fact that there is a NCP in the government, there is an NCP in the opposition, there's a Shiv Sena in the government, there's a Shiv Sena in the opposition. So it's a very precarious situation for Maharashtra, which is very sad. We are the state capital. We are the economic capital of the country. It's very, very sad. Thank you, Sujit ji. Thank you, guys. Thank you, Shashank.